तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ना चालू करेंगे। वो टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो टुडे विल बी लर्निंग दिस टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्टली we'll try to understand what do you mean by conditional probability. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? तो प्लीज आई एम राइटिंग डाउन द डेफिनेशन, आप भी एक बार नोट कर लो। देन मैं आपको समझाता हूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो लेट ए and B, let A and P be any two events. Let A and B be any two events in sample space S. In sample space, in sample space S. Okay. तो हमारे दो इवेंट्स है A and B in sample space S. तो probability, I repeat myself, probability that A will occur, probability that A will occur, probability that A will occur given that B has already occurred. Probability that A will occur given that B has already occurred. ये सारे टर्म सही से नोट डाउन कर लो। ये होगा आपका डेफिनेशन फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। is called conditional probability of A. Is called conditional probability of A. Is called conditional probability of A. So what happens is that conditional probability का मतलब क्या है समझ लो। मेरा A and B दो इवेंट है और सैंपल स्पेस S है। So the probability that A will occur given that B has already occurred is called as conditional probability of A. अभी इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझने का कोशिश करते हैं। ओके, जो हमने वर्ड्स में पढ़ा उसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बताते हैं। सो ए एंड बी जो है दो इवेंट्स है इन सैंपल स्पेस एस। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या? बी that A will occur given that B has already occurred. तो B जो है ऑलरेडी ऑकर हो चुका है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑकरिंग का क्या है? इज कॉल्ड एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्लीज सही से समझो, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। Probability that A will occur given that B has already occurred is called as conditional probability of A. Meaning that B has already occurred. B has already occurred. And what is the probability of A is called as conditional probability. So B already occur हो चुका है, A का occurrence का probability क्या है is called as P of A given B. इसका जो फॉर्मूला है ये प्लीज नोट डाउन कर लो। P of A intersection B upon P of B in which your P of B is not equal to 0. ये है बेसिक फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। So if you get a question in the paper, what is conditional probability? Please write down this definition. ये definition को सही से लिखो कि A and B दो event है in sample space S. The probability that A will occur given that B has already occurred. So B has already occurred and A will occur is P of A intersection B upon P of B, where P of B is not equal to 0. Okay. Then your P, अभी समझो P of A given B can be written as P of A dot P of B upon P of B. मतलब क्या है कि A and B, if A and B are independent, I repeat myself, if A and B are independent, so P of A given B is given as P of A intersection B upon P of B. P of A intersection B is equal to P of A into P of B upon P of B. ठीक है, अभी P of A intersection B is equal to P of A into P of B given A and B are independent. Therefore,
P of A given B can be given as P of A. I hope I am very clear. ये चीज आप ध्यान से याद रखो. So conditional probability का मतलब क्या है? Conditional probability means if there are two events A and B in sample space S, conditional probability is given as P of A given B. ये स्लैश को given बोलते हैं. Given B is equal to P of A intersection B upon P of B, and P of A intersection B is equal to P of A into P of B. A and B are independent. B और B cancel out हो जाता है and P of A remains. ठीक है, तो ये सही से याद रखो. अभी हम एक थियरम पढ़ेंगे और दो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले हम थियरम नंबर 1 पढ़ेंगे. सो प्लीज थियरम का स्टेटमेंट लिख लो, वरना हम इसको प्रूव करेंगे. ये आपके एग्जाम में आ सकता है. इट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर फॉर प्रूविंग दिस थियरम. ओके, सो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, if A and B are independent events, prove that. If A and B are independent events, prove that A bar and B bar are also independent. So if A and B are independent events, prove that A bar and B bar are also independent. Okay. So इसका solution हम देखेंगे किस तरह सॉल्व कर. ओके, तो गिवन में क्या है? A and B are independent events. Given क्या है? A and B are independent events. Therefore, P of A intersection B is equal to P of A into P of B. ये आपको गिवन है, राइट? जब मैंने बोला कि A और B इंडिपेंडेंट है, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A into P of B. टू प्रूव क्या करना है? A bar and B bar are also independent. So अगर A बार एंड B बार को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, मतलब हमें क्या करना होगा? A bar intersection B bar should be equal to P of A bar dot B bar, right? Since मुझे क्वेश्चन में दिया है A and B are independent, therefore P of A intersection B is P of A into P of B. Similarly, to prove that A bar and B bar are also independent, that means P of A intersection A bar intersection B bar is equal to P of A bar into B of B bar. That is very important. Okay? तो अभी हम प्रूफ करते हैं. प्रूफ में जाते हैं और इसको प्रूव करने का कोशिश. So by De Morgan's theorem, हमें पता है कि P of A bar intersection B bar is equal to P of A union B bar. So P of A bar intersection B bar is equal to P of A union B the whole bar. Simple. So इसको हम लिखेंगे 1 minus P of A union B. Right? अभी हमें पता है कि P of A union B लिखा जाता है P of A plus P of B minus of P of A intersection B. तो ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं. 1 minus P of A minus P of B plus P of A intersection B. अभी इसमें क्या होता है? 1 minus P of A minus P of B. और आपको पता है कि अगर मेरे इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, दैट मींस P of A intersection B
is equal to P of A into P of B. Therefore, plus P of A dot P of B. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 1 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटू बी. सो 1 माइनस पी ऑफ बी माइनस ऑफ पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी. 1 माइनस पी ऑफ बी, और इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस पी ऑफ बी. therefore 1 minus p of a into 1 minus p of b, which can be written as p of a bar dot p of b bar, which is p of a bar intersection p of b bar. ये याद रख. So what do you mean by this is that if a and b are two independent events, then you know that p of a intersection b is equal to p of a into p of b. Therefore, if a bar and b bar are also independent, if I have to prove, then I need to prove this thing, which I have proved from it. Okay, so this question can come in your paper, तो ये आप ध्यान से याद रखो. अभी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, प्लीज क्वेश्चन नोट डाउन कर लो. इन throwing in throwing a fair dice, in throwing a fair dice, a event is the outcome greater than 3. B is the outcome as an even number. So what is stating? A is the outcome greater than 3. B is the outcome as an even number. Find probability of A, probability of B, the conditional probability P of A bar given P. So P of A given B. तो सिंपल है. अगर मैं बात करूं इसका सोल्यूशन का, आई थिंक P of A and B तो हम वैसे भी ढूंढ सकते हैं. The sample space S is given as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore, number of sample space is equal to 6. अभी A क्या है? Is the event greater than 3? Is the event greater than 3? Therefore, A is equal to 4, 5, 6. Therefore, your probability of A is equal to n of A upon n of S. n of A कितना है? 3 है. n of S कितना है? 6 है. 1/2. So now what is B? B is the outcome of an even number. So B क्या है? Is the outcome as an even number. B is the outcome as an even number. So B का मतलब क्या है? 2, 4, 6. N of B is equal to 3. Therefore, P of B is equal to N of B upon N of S is equal to 3/6. It's 1/2. तो मैं सही से लिख देता हूँ 1/2. ठीक है. अभी थर्ड क्वेश्चन जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्वेश्चन मार्क. तो इसका हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? P of A given B is given as P of
A intersection B upon P of B, wherein is P of A dot P of B upon P of B. ये सही होता in case it is a independent event. But since question में ऐसा कुछ नहीं दिया है, we cannot use this formula. So the only thing we can use is P of A given intersection B upon P of B. So P of B का तो हमारे पास formula आंसर like solution है, and P of A intersection B का ढूंढो. So P of A intersection B is given as N A intersection B upon N of S. So A intersection B क्या है basically? कितने वैल्यूज आते हैं A intersection B में? 4 5 6 4 5 6 2 4 6. तो फाइनली क्या है? 4 and 6 है वैल्यू. Therefore, N of A intersection B is equal to 2. राइट? तो आपको ये वैल्यू इधर डालना है. इज इक्वल टू 2/6 बिकॉज हमारा N of S जो है वो तो है 6 which is given as 1/3. So finally, P of A intersection B, A given B, जो मेरा conditional probability होता है, that is P of A intersection B upon P of B. तो P of A intersection B मतलब क्या है? 1/3 and P of B क्या है? 1/2 is equal to 2/3. तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर. तो इस तरह का ये लेक्चर रहा है जहां हमने पढ़ा है व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसका डेफिनेशन, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक थियरम पढ़ा है जो आपको आ सकता है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रूव दैट ए बार एंड बी बार आल्सो इंडिपेंडेंट. उसके बाद ये हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया. ठीक है. So if you have any doubts, please comment in the comment section. Thank you.